Uh, I'm Ashutosh Mishra, and I'm here with you for some minutes. I'm actually a big LinkedIn influencer. छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं, काफी बड़ा मेगा इन्फ्लुएंसर हूँ. There are millions of followers. You can see it on LinkedIn. And my chief job there is to motivate people. I motivate these startup types, the professional managers. क्योंकि HR के मारे हुए सब लोग हैं यहाँ पे, उनको सबको मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ. तो मैंने कहा चलो ये मोटिवेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक स्टार्टअप वालों को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो अपना एक स्टार्टअप करना चाहिए. तो मैंने एक स्टार्टअप बनाई अपनी, motivateyouраss.com. So why motivateyouраss.com? Because I'm an engineer from IIT, तो एनालिसिस तो हर चीज में करते हैं. तो मैंने कहा भाई कुछ भी अगर आपको करना होता है तो you have to move your ass. और IIT में हमारा कुमाऊं हॉस्टल में एक वो फट्टा होता था कि भाई किसी को अगर मोटिवेट करने के दो तरीके हैं. पहला ये कि उसको बोलो भाई तू जाने दे, तेरे से नहीं होगा, राइट. दूसरा तरीका क्या है? देयर वाज समथिंग कॉल्ड कीटा. कीटा वाज अ टर्म व्हिच वी डिजाइन्ड, व्हिच वाज किक इन द एस. अगर बोल के मोटिवेट नहीं हो रहा तो किक इन द एस, एक लात मारो, मोटिवेट हो जाएगा. So I started this company, motivateyouраss.com, and this is the newest unicorn in town. Even before valuation, it is a unicorn. I'll tell you, because I was alone in the company, so it is uni, and I kept my logo as a corn, so it became a unicorn. तो यूनिकॉर्न का जमाना है, तो यूनिकॉर्न तो बनाना ही पड़ेगा. उसके बाद अपनी वेंचर कैपिटल तो अपने आप आ जाएगी. तो बिफोर लॉकडाउन में सड़क पे जा रहा था, ऐसी अभी तो वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करते हैं. मैं सड़क पे जा रहा था रोड पे कि किसी को मोटिवेट करना है, पकड़ो यार. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला. तो ये आदमी जो है बड़ा शैबी सा, एक फटी हुई अंडी पहन के जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. बारिश हो रही थी, कीचड़ था, उसमें जामुन गिर रहे थे वहां से ऊपर से सड़े हुए. तो ये बंदा वो जामुन कीचड़ में से उठा के अपने खा रहा है एक एक करके. तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, बेचारे की जिंदगी झंड हो गई है, इसको बोलते हैं कि तू थोड़ा कुछ कर अपने लिए. तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ बैठे हो ऐसे, फटी हुई अंडरवियर पहनी है, जामुन खा रहे हो, तो व्हाट मोटिवेट्स यू इन, व्हाट इज, आपको क्या मोटिवेट करता है, आपके शौक क्या है? तो भाई अमिताभ बच्चन का फैन निकला, बोलता है हाय अपने तो दो ही शौक हैं, अच्छा खाना और अच्छा पहनना. तो मैंने कहा ये बहुत सही आदमी है, इसको रिक्रूट कर लो अपने यूनिकॉर्न में, वैल्यूएशन जो है 2 बिलियन तो अपने आप हो जाएगी. तो मैंने उसको फटाफट रिक्रूट कर लिया सीएमओ के पोजीशन में. अभी सीएमओ का मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं है, सीएमओ हमारी कंपनी में है चीफ मोटिवेटिंग ऑफिसर, राइट. क्योंकि अपना तो काम है मोटिवेट करना लोगों को, motivateyouраss.com. And by the way, don't get excited, it is not motivass.com, it is motivateyouраss.com. Let's be very clear what we are talking about. So ये भाई, इसको मैंने बोला यार तू अभी ऑफिस तो है नहीं, छोटी सी अपनी जगह थी, मैंने कहा तू यहाँ पे ले ले कमरा, तो अपने जो भी नए एम्प्लॉइज आएंगे, जो अपने क्लाइंट्स होंगे, उनको तू मोटिवेट करियो मेरे साथ. तो एम्प्लॉइज हमने हायर किए. अपने एम्प्लॉइज को भी हमें मोटिवेट करना जरूरी था, क्योंकि वो पहले दिन से ही थोड़े सड़े हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरे क्लाइंट्स को क्या मोटिवेट करेंगे. तो एक मेरा एम्प्लॉई आया, वो भाई पहले 1-2 दिन काम किया उन्होंने, फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ में. तो मैंने इसको अपने सीएमओ को, चीफ मोटिवेटिंग ऑफिसर को बोला यार इसको मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, तो इसको मोटिवेट कर दे. तो वो गया अंदर, एम्प्लॉई मेरा, उसके पास, बोला कि सर मेरी मोटिवेशन की बड़ी कमी हो गई है, मैं बड़े सपने लेके आया था, मेरे को तो यहाँ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, मैं तो खुद डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ. तो ये उसको बोलता है, फिर अमिताभ बच्चन का उसका वो आ गया रूप, बोलता है तेरे पास सूट है, टाई है, गाड़ी है, देख मेरे पास क्या है, फटा हुआ अंडरवेयर और सड़े हुए जामुन, फिर भी मैं मोटिवेटेड हूँ. तो तू इस पे भी मोटिवेट नहीं हो रहा, और मोटिवेशन चाहिए तेरे को, चल भाग यहाँ से. वो करके उसने उसको मोटिवेट करके हमारा जो पहला एम्प्लॉय था उसको भी भगा दिया. कुछ नहीं हो गया, बस बाकी था. That's it guys, thanks a lot, you've been a wonderful audience, thanks a lot. Give it up for Ashutosh sir, guys. It's tough going first. It's absolutely tough going first. And excellent, Ashutosh. Thank you. I think Wonderful. all married men will be part of your company. They will be my clients.
Wife use both the ideas, kick in the ass. You can come again, Ashutosh. Thank you. Yes, I've been like doing nothing. Keep on switching things, and off recently I'm a like chess trainer for kids. I came to IIT from government school background. तो सरकारी लोगों का तो सरकारी स्कूलों को तो ये जो डीपीएस से आते हैं उनको तो वो राइट होता है कि इन लोगों का चूतिया बनाना है और इन लोगों के फट्टे इन्हीं पे मारने हैं। पहले इन लोगों को सोशल लेके जाओ और फिर इन्हीं पे फट्टे मारो। तो मैं आई वाज लाइक गवर्नमेंट स्कूल से पहली बार मैंने हाउ एक्चुअली माय फ्रेंड मोटिवेटेड मी कि कहता है यार, मैंने कहा यार कुड़ी पटानी है, कहता है यार आईआईटी क्लियर कर ले। मैंने कहा हाँ यार ये आसान लग रहा है rather than talking to हाँ, तो we thought कि यार चल यार फिजिक्स के पढ़ लेते हैं। तो मैं पहली बार जब आईआईटी गया ना तो मैं एक दोस्त को साथ लेके गया, देख मेरा कॉलेज देख क्या कॉलेज है यार। तो कॉलेज लेके गया, लेकिन रैगिंग उन दिनों रैगिंग भी होती थी। तो सबसे पहले मेरे से एक छोटा सा फुंटी था, मेरे को पकड़ के पहले तो रैगिंग किया, मेरी तो फट गई। तो फिर उसके बाद बोलता है कि यार अच्छा एक बता, फादर डी फादर का इंडिकेशन बता। फादर डी फादर का इंडिकेशन बता। मैं कहा यार मैं खुल के बोला, मैं कहा यार ये तो मुझे आता है, हाफ फादर स्क्वायर। सो फिर वो वेरिएबल और उस पे दे फटे शुरू हो गए। और आई डिड इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यू नो, एंड माय नेम इज अरोड़ा। यू नो आईआईटी में क्या बना देते हैं अरोड़ा का, क्या यू विल हैव अ निकनेम। तो वहाँ पर आईआईटी में जाने के बाद ना सबसे पहला मेजर ड्रीम होता था कि यार खुद को स्टड बॉय कहलाना। वी हैड अ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों का ये होता था कि यार स्टड बॉय कौन, स्टड बॉय कौन, वो नहीं जिसकी 10 आती हो, स्टड बॉय वो जिसकी गर्लफ्रेंड हो। और वहाँ पे या जिसके नहीं तो और कुछ नहीं तो फोन ही कर देते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे यार चल यार किसी बहाने स्टड बॉय कहलाने के चक्कर में ना कि चल यार कोई कज़न ही मिलने आ जाए। चल यार इससे लड़की मिलने आई है। तो हम कोशिश करते थे कि कज़न ही मिलते आ जाए। तो या वो एक तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, सरकारी बैकग्राउंड, इंग्लिश बोलनी आती नहीं, तो उसके बाद सारे फंडे की भैया स्टड बॉय कहलाना है, जो स्टड बॉय कहलाना है। तो और फिर मैं पहली बार आया तो फिर रैगिंग मेरी उन दिनों एक रुड़की करके बंदा होता था, ही यूज्ड टू रैग अ लॉट। तो उसने मेरी जाके मेरे दोस्त के सामने मेरी फाड़ दी। मैंने कहा मैं तो कॉलेज नहीं जाऊँगा। आई सेड तो पेरेंट्स गॉट वरीड कि यार ये तो इतनी मुश्किल से हुआ, ये तो जाने के मत नाम नहीं ले रहा। एंड देन मे आफ्टर वन आफ्टर maybe some nice incident that happened was कि somebody asked me कि यार तो मुझे फक की स्पेलिंग बता दे यार। एक सीनियर ने पूछा ओ इधर आ, फक की स्पेलिंग बता दे। मैंने कहा यार अब वो पता इंग्लिश तो क्या हमें तो इंग्लिश तो आती नहीं। मैं कहा यार ये कुछ आसान तो पूछेगा नहीं। वो फिजिक्स पढ़ी हुई थी, वो इंग्लिश तो पढ़ी नहीं थी। मैंने कहा यार PHQ। मैंने कहा यार, मैं बहुत सोच के मैंने बोला यार नहीं यार काफी सोच रहा PHQ कहता है। तो बहुत हंसा। उसके बाद मेरी कोई रैगिंग नहीं। उसके बाद मेरे को किसी ने तंग नहीं किया। वो बहुत दूर से बुलाते थे, कहता कहता भाई इधर आ, फक की स्पेलिंग बता दे यार। स्पेलिंग सुनते थे, खुश होते थे। और सब पूरा मेरा वो सेमेस्टर में। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल यू रिमेंबर इफ यू आर अराउंड दैट एरा कि एक तो हनीमून पे भेजने का बहुत शौक था उन दिनों लोगों को। यू रिमेंबर सम पीपल यू रिमेंबर कि साला अच्छा कहाँ जाएगा हनीमून पे, कश्मीर जाएगा, अच्छा ये ले कंबल लेके ऊपर पहुंच जा, गर्मी में साला 1 घंटे से कंबल ऊपर लेके बैठे हुए। और या फिर अगर गोवा जाएगा तो चल साला पलंग के नीचे घुस जा। So those kind of things were used to be there. And then उसके बाद सबसे बड़ा जो I was from government school and then वहाँ पे DPS के लोग होते थे। DPS लोगों का एक फेवरेट पास टाइम होता था कि यार सरकारी स्कूल के बच्चे पकड़ो और इनको सोशल ले जाओ और इनको कटवा, इनका वहाँ कटेगा और साला हम जोर जोर से हंसेंगे। तो उन दिनों they used to come like brute आता था, कहता brute
कहता यार, और मतलब ये एक अपना टाइम था 92 का जब ब्रूट की भी राशनिंग होती थी। हम साला सारा सब काम छोड़ छाड़ के बंदियां खाने के लिए आती थी, हमें पता ही नहीं होता था। एंड वी यूज्ड टू लाइक कि 3 बजे आ गए और 3 से 7 बजे तक नहा रहे हैं। और फिर साला ब्रूट की लाइन में लगे हुए हैं, ब्रूट की लाइन में लगे हुए हैं, और फिर बन गए अपना ट्राई मारने चले गए सोशल में वही हुआ कहते साला मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश में बोला, यू वांट टू डांस? डू यू वांट टू डांस विद मी? तो वो हंस के चलेगी, सरकारी उसकी। वो फाइनली पता नहीं मेरे एक कोने में एक लड़की खड़ी थी, मैंने उसको पूछा यार कि मैंने कहा चल यार कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं ही बात कर लेता हूँ। तो शी एग्रीड, तो मैंने कहा यार चल ठीक है यार, कि काफियों को तो मिली भी नहीं, मेरे को तो मिल तो गई। तो शी यूज्ड टू वियर ब्रेसेस, तो लेकिन कहता शी यूज्ड टू वियर ब्रेसेस। उसके बाद वो शी स्टार्टेड कॉलिंग एंड मैंने कहा ठीक है यार साला ये तो बात बन सी रही है। एंड देन आफ्टर ब्रेसेस के बाद यार ये तो बंदी ठीक से निकली यार। मैंने कहा यार साला जब किस्मत चमकनी होती है तो ये थोड़ा कोई पूछता है कि ऊपर वाला कि तेरा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का है या तेरा जीई स्कोर कितना है। and then this just keep on happening then, but somehow maybe वो खत्म हुआ तो देन we सारे डीपीएस के थे कि भैया क्या करना है, एलआईसी के चक्कर लगाना है, एलआईसी के चक्कर कोशिश करनी है, कीप ऑन ट्राइंग समथिंग, यू नो, क्या करना है, क्यों क्यों चाहिए गर्लफ्रेंड, क्यों, क्योंकि भैया स्टड बॉय कहलाना है। स्टड बॉय कहलाना है। एंड देन तो एक बार एक बंदी का फोन आ गया मेरे पास, 3 बंदियां मेरे को बारी-बारी से कॉल कर रहे हैं। मैं कहा यार ये तो बस एक नहीं 3-3, तो उनमें से फिर एक बातों-बातों में एक और उन दिनों ना बस मतलब कौन स्टड बॉय जो फ़ोन से चिपका हुआ है। उसका फ़ोन आ रहा है। तो भैया चलो अब 1 महीने तक इट वाज़ लाइक नेवर मेट द गर्ल बट 1 महीने 1.5 महीने तक बात होती रही। तो आई सेड कि चलो यार बहुत हो गया मिलते हैं। 2 माइनर्स के बीच में मैं मिलने गया उसको। 2 माइनर्स के बीच में जब मैं मिलने गया तो मैंने कहा यार एक बहुत ही माल सी बंदी खड़ी थी। तो मैंने कहा यार बाप बेटा ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ये तो गजब ही हो गया। आई सेड आर यू दिस? नो नो सॉरी कैरी नो 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 माय नेम इज आई एम नॉट दिस आई एम फॉर समथिंग एल्स फॉर समवन एल्स। तो तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा कहती है, उसने पूछा आर यू दीपक? मैंने पीछे मुड़ के वापस किया, नो नो आई एम सॉरी आई एम नॉट दीपक। So that's all, guys. Okay, Gav, back to Thank you. you. डैडी मिल गए। पापा को Rohit, अंडरएस्टिमेट नहीं करना बस। Rohit, by the time he comes back, you want to do for 3-4 minutes? हाँ कोशी, come on. Koshi, yeah. नहीं, let Sundip do something. हाँ मैं कोशी कोई कहानी सुना दो आप भी। कोशी के पास इंटरेस्टिंग। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, जॉली साहब को बोलता हूँ। कोशी के पास कहानी नहीं है, पूरा नॉवल है उसके पास। नोवेल है। अच्छा नहीं मैं चलो उसके लिए टाइम मैं चाहिए। मैं थोड़ा मैं एक्चुअली हम पंजाबी ना, मैं तो पंजाबी तो while the पंजाबी ना like corporate people they hate the gym, अपन सारे पंजाबी तो मैं अपन से डोले बनाने वास्ते जिम जाते हैं कि हमें डोले छोले बनाने हैं। तो एक सरदार आ गया जिम में, कहना और अच्छे खासे डोले बनाए। अब जिम में पता क्या होता है कि जिम इज सो बोरिंग दैट कि यू हैव टू पंप अप ईच वन एवरीवन, कहना पंप अप एवरीवन, कहना यार तेरी मसल्स बहुत अच्छी निकल आई। हर 10 मिनट बाद ना आपने देखा होगा जिम में ना एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, यार तेरे मसल्स बहुत अच्छे निकल आए, ये तेरा लुक ठीक आ रहा है, बिकॉज सो बोरिंग अदरवाइज यू डोंट फील वेरी मोटिवेटेड। तो सरदार को किसी ने वो बेंच प्रेस कर रहा था, बेंच प्रेस करके उठा, कहना है यार कि यार तेरी चेस्ट तो मस्त निकल आई है। कह रहा है यार ये तो कुछ नहीं, तू अभी भाभी की देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। सो मतलब आप दे सो हम्बल गाइस, मैं पंजाबी में कह रहे हैं। और साडा पहला तीर्थ स्थान हैगा
कनाडा। Canada. मैंने I'm not joking this time, joking guys. I've seen 85-year-old women standing in the queue of embassy and saying, "हुन पुत्र हुन कनाडा जाइए ते सांस थोड़ा ठीक ठीक से मतलब death will be very comfortable." So कि सांस ठीक से निकल जाएंगे। So I think we got someone from Canada also, right? Yeah. Somebody कनाडा जाने के बिना ना, एंड मैं भी जब मैं फर्स्ट टाइम वही होता है ना, अमेरिका जाना है। तो जब मैं पहली बार तब गर्लफ्रेंड तो फिर वो नौकरी पे लग गए और सरकारी स्कूल के थे तो गर्लफ्रेंड तो बननी नहीं थी। तो जब मैं तो फिर हमें नानी आती थी, कहती है वहाँ पे ना कुड़ियों के पीछे मत जाइए, अमेरिका में ना कुड़ियाँ पीछे पड़ जाती हैं तुम्हारे। मैं कहा यार यहाँ तो मिली नहीं शायद, वहाँ पर शायद जाके कुछ हो जाएगा। मुझे अंदर से उम्मीद थी। तो मैं जब फ्लाइट में बैठा ना, तो मैं देखा यार 2 एयर होस्टेस ना क्या कहते हैं, दोनों की दोनों मेरी तरफ इशारा करके ये एग्ज़िट है, वो पीछे एग्ज़िट है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मेरी को ही देखे जा रहे हैं। तो मैं तो एक्साइटेड, मैं कहा यार ये तो जो एयरपोर्ट जाते ही किस्मत में बदलाव हो गया। फ्लाइट में बैठते ही शुरू हो गया। तो मैं हाँ, तो फ्लाइट में फिर मैंने बाद में जाके मैं कहा यार ये तो काम कर रहा है यार, अमेरिका जाने से पहले ही शुरू हो गया। तो मैं बाद में जाके मेरे को देखा कि साला पूरे फ्लाइट के सारे लोग सो गए, मैं ही जागा हूँ। Listening to that. Amazing. Awesome. And thank you so much because we have covered my internet lagged and I'm so glad that you took over and covered up for me. And I'm just and it was very entertaining. Like मेरे को रोकने का मैंने कहा था, but the best part is कि मैं अभी घर में ना ऐसे 2 वाईफाई और 1 हॉटस्पॉट रेडी रखता हूँ। नहीं, हम तो यही मजाक उसके करते बाद लगते डैडी भी पीछे आ मतलब गए, तो बड़ी डैडी ने कहा, हम तो ये कहते कि दरवाजा खुला डैडी आ गए। अरे वो आए होते तो शायद से मतलब वो फिर लैपटॉप भी बंद हो जाता। मैं इसीलिए बॉम्बे रहता हूँ। ठीक है, सही है। But like till where could you hear me? तो तेरी वो सीसीटीवी वाले कैमरे वाले सीसीटीवी तेरी हाँ, पड़ोसी की CCTV तो कार, चोरी हो गया था। मतलब पड़ोसी की कार चोरी करवा दी थी तूने। उसके बाद अब और तेरा सीसीटीवी देखो ना, चोरी हो गया। कैमरे के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे भी कैमरा रो रहा था कि क्यों मेरे को होंडा सिटी दिखा रहे हो डेली। कम से कम होंडा सिटी तो देखने को मिलेगी उसके बाद उसको। पर उस दिन हम ये श्योर हो गए कि हमारी सैंट्रो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि OLX ने 6 महीने पहले गिव अप कर दिया था। हमने 3 महीने ऐड की, बड़ी मुश्किल से एक आदमी माना गाड़ी खरीदने को। आधे घंटे बाद हमें फोन करके गालियां दे रहा है कि भाई साहब क्या गाड़ी बेच रहे हो आप, जितने में मैं आपसे सेंट्रो खरीद रहा हूँ उससे ज्यादा आपके घर तक का टैक्सी में दिखा रहा है। तो गाड़ी आप ही रख लो GST समेत। और उस दिन जैसे आप लोग के घर में ऐसे अलमारी के ऊपर अलमारी होगी या बेड के अंदर वुलन्स रखते होंगे, मेरी मम्मी बुलेट पे सेंट्रो रखने लगी। But on that note, I would want to bring on the final performer for today. So Okay, please put your hands together, guys, and welcome. Yeah. Just a small thing. मैं तेरे सेंट्रो से याद आया, हमारे टाइम पे ना एक लिबरेटर स्कूटर होता था। लिबरेटर, you know, पीछे से आगे से थोड़ा टेपर, पीछे से याद है। तो हमने सेकंड हैंड खरीदा था, उसका नाम रखा हुआ था आशा पारिक। ठीक है, चलो। Yeah, sorry, All right. Bring on Sundi sir. So the next performer is is very special. He's based in Texas, and obviously he's smarter than the so-called president from Texas, because unlike Donald Trump, the next performer went to IIT. But also the best part is that he has been head a lot of companies. And Rohit sir asked me to give him a special introduction, which is why I'm like sort of delaying bringing him on. And the reason I do so is because Sundi sir happens to be Rohit sir's senior. So this means that Sundi sir is more connected than Rohit Koshi sir, which is like infinity raised to the power infinity. ओके, लाइक मेरे को बीच में ऐसे डर तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। एंड उसमें जो हार्ट अटैक आता है ना, इट इज बट सुंडी सर
lives in a place called Sugar Land in Texas, but he looks more like a sugar daddy. Hello? That's dangerous. Then he went to MIT, which is like one of the topmost Sloan School of Management. And after heading so many companies, I've realized that he's now entering comedy as well, which makes me feel threatened about my job. So please put your hands together and welcome to the spotlight, our last performer for the evening, Mr. Sundi Srinivasan. Thank you so much, Garv. By the way, it'll be really great if you guys could kind of unmute, because noise and having fun is the real fun of doing stand-up. So Right. Sure. those that Yeah. who have some background noise, it's fine, but who cares? Just Yeah. get them. There we go. So first of all, guys, I'd like you to give it up for Garv, Ashutosh, and Deepak. I mean, I think they've done a phenomenal job. Stand-up comedy is not an easy thing to do, on top of it virtual. So guys, phenomenal. I kind of wanted to take off on something that Deepak made my life a little bit easy, because I was telling Rohit, I said, hey, it might go slightly on the borderline, and Rohit was a bit worried, but Deepak started us off with PHAQUE, so I'm good now, so people can blame Deepak for this whole story, right? By the way, you shared this story about asking this girl to dance with you on a social, right? Right. You dance with me, etc., and then there was a problem. It's all related to IT. Most Indians should know that everything is related to IT. This is a virus problem called ransomware. You asked her to dance with you, she ran somewhere, you see. By the way, guys, thank you very much for the opportunity. It takes me back to the SEM hall and convocation hall back in those good old days. Geez, it seems so far ago now, 1979 to 84, where I spent more time than in actually my classes. Then I was quite fortunate to be picked up by Schlumberger straight out of college. So I've been with Schlum for a little over 25 years, and then I retired. So recently talking to my financial advisor, and he looked at all my bank accounts and so on. He says, yeah, Saleh, you spent more than 2.5 decades with Schlum, and Saleh, paise nahi kuch hai nahi tere paas. Beta, ek chakkar hai, tere ko batao, not every slum dog becomes a millionaire, you see. Yes. तो ऐसा है, मैं सोचा यार कोरोना चल रहा है, ये कोरोना का नाम ही थोड़ा सा गलत ही रख दिया है. If you really look at it, it's not allowing you to do anything. So the disease name is right. You just have to, I think, specifically say it properly. This is a disease called Corona. Corona. Correct. So how many of you guys are married out there? Make some noise. Yeah. You had doubts? नहीं यार, लोग हंस रहे हैं इसलिए थोड़ा डाउट हो गया यार. देख सुंडी सर के सारे बाल चले गए यार, शक्ल देख के पता नहीं लग रहा मैरिड हूँ. हाँ, ये बात तो सही है, मगर कम से कम तो बाल कलाकार तो लग रहा है, एटलीस्ट नो बाल कलाकार तो लग रहा है. तो जितने भी जो शादीशुदा है ना यहाँ पे, ये बीमारी उनके लिए अलग बीमारी है. कहते यार, एक तो वैसे ही सांस की प्रॉब्लम, एक और सांस की बीमारी, हाल ही में आपने सुना होगा कि मोदी साहब को ट्रंप ने जो है लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया. Those that don't, Modi has been awarded the Legion of Honor Award. तो मैंने कहा ये बड़ी संदर्भ की बात है. आप सोच रहे होंगे यार, श्रीनिवासन के मुंह से साला ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द निकल रहे हैं. संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्चुअल बात ये है कि ट्रम्प थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार. मोदी जी के थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह देख के, लंबे लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, ये वो कहता क्रिसमस के टाइम में जो है ना, सांता क्लॉज से पंगा नहीं लेना चाहिए. सांता क्लॉज अवार्ड दे ही दो. That's a good one. So Garv, talked about IIT, MIT, and all these things. All these degrees don't really mean anything, and it's really the children that bring you down to earth. So I remember I stay here in a locality a few blocks down from where I live. You have these real fancy houses. I mean,
I'm talking about where you need a telephone to speak from room to room, 2 tennis courts, couple of swimming pools, that kind of place. And one of my friends, and he became a friend because of my son, because my son and his son go to the same school. Wow. So my son goes, plays at his house and comes back to our home and looks around. He says, Dad, we live in a shit house, you know. मैंने कहा यार उसको बिठाया जो है, had the standard Indian dad story, right? कि देखो यार, you know, ऐसा है कि these are all material things, blah, blah, blah. You know, the usual dad story, right? Yeah. I said, however, having said that, it is okay to aspire to have that. That's okay. That's but your job right now is to study hard and work hard, and you know, you can aspire to these things. So सबसे पहले साला सीढ़ियाँ चढ़ता है, he goes away from me, so the distance he creates first between us, right? And he says, Dad, looking at our house, obviously you didn't study very hard. Correct. So before going into the segment I'd kind of planned for this evening, which is a little world tour and a little fun with English accents, that's what I thought I'd planned for today. I just thought I'd have one olden goldie from Delhi. This is one of the old ones I used to really enjoy. आपको पता है दिल्ली में रामलीला होता है, वो छोटे-छोटे मोहल्ले में, तो डायलॉग बड़े-बड़े अजीब निकलते हैं उसमें. तो एक सीन शुरू होने से पहले जो है विंग्स में वो बंदा बीड़ी मार रहा है, you know, फटाफट जो है सीन से पहले. दूसरा कहता है यार एक कष्ट है यार, कहता नहीं हो, नहीं सीन शुरू हो गया यार. तो सीन शुरू होते ही सीन था जी, हनुमान जी पहुंचे हैं लंका और रावण जो है ठीक है, बड़ा सीन चल रहा है. तो कहता है हे रावण सिद्ध डैणी केड़ी डैणी, कहता है हे रावण सिद्ध डैणी केड़ी डैणी, कहता नहीं देता बीड़ी दी तूने. So those bring back memories of those days. So little quote from My Fair Lady, right? So those of you who remember My Fair Lady, Oh yes. you know, Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning, and the Hebrews learn it backwards, which is absolutely frightening. But use proper English, you're regarded as a freak. Oh, why can't the English learn to speak? The Scotch and the Irish leave you close to tears. There even are places where English completely disappears. Why in America? They haven't used it for years, right? So establishing the point that even the English can't speak English, it is okay to have fun with a few other nationalities that can't speak English either, and just to have some fun with accents. I guess this was a caveat to say that it's just in pure fun. It's not intended to be derogatory to anybody per se, but I wanted to first establish the fact that the English can't speak English anyway, and neither can the Americans for that matter, right? So let's start off with some African American, just to get the ball rolling. For those who've been to the States or not, this is an African American lady. She would go, I ain't giving you no $5 now. You hear, Moving on to Louisiana, you see guys with a Pepsi can always spitting tobacco, you know, chewing tobacco and spitting it in the can. So here's your Louisiana bubba for you, right? Hey boy, let me tell you something. I do only two things. I kick ass and I chew gum. Right now, boy, I'm plumb out of gum. Wow. Let's get you guys, you're not that familiar with the States, so let's get you guys a little closer to home. Let's go to Europe. So let's go to, I guess, the border of Ireland and Scotland, okay? So if the accent gets too heavy, I'll try to go slower. Let me know, scream and say repeat or whatever, and we do it, okay? So Paddy was driving around in his wee little car in a small little town in Ireland, you know. I deliberately did it a little faster, so I'll go slower. Yeah. Paddy was driving around in his wee little car in a small little town in Ireland, you know. And then he spots, he says, there's a gas station there. Oh, shite, I forgot. In Ireland, they don't call it a gas station. They call it a petrol station. He said he spotted a petrol station. He said for an extra 6p a liter, I can get free sex. He says, okay, I'll have me some of that. So he goes to the petrol station. He fills up his car for an extra 6p a liter. He goes into the shop and says, hey, I filled my car for an extra 6p a liter. Where's me free sex? He says, oh, that's right, Paddy. You did fill your car for an extra 6p a liter. Pick a lucky number. Pick a number, actually. Not a lucky number. Pick a number from 1 to 10. So Paddy says 6. He says, shite, Paddy. Today's lucky number was 7.
And this shit goes on week after week after week. And Paddy never seems to win any sex at the gas station, but he still goes there and he still fills his car for an extra 6p a liter. One day he meets his friend O'Brien at the supermarket. O'Brien says, "You silly idiot, I hear you've been filling your car every week at that stupid gas station. They're having you on." He says, no, they're not having me on. The system isn't rigged. He says, "How do you know the system isn't rigged?" He says, "My wife won twice last week." And then I'm taking liberty with Deepak, got slightly borderline. This is actually a true story that happened. We were having a budget meeting in Dubai, and the personal manager was French. And he starts off the meeting, and the previous year, actually, we had got rid of a lot of employees, you know. And the guy starts the budget meeting. You know, of course, first of all, to understand a little bit of how the French speak, you have to first get into the mood of understanding what they say. If that is clear, I carry on. So this guy starts off. He says, "Gentlemen, we lost a lot of fuckers last year." Yeah, we did release a few guys, but man, that's a very strong way to start the meeting. We lost a lot of fuckers last year. Acha bhai, we kya bol kya raha hai? Then he suddenly realizes, he says, fuckers, we lost a lot of fuckers last year. I'll tell you. Okay. I'll tell you one small, maybe I'm interrupting in between. No, go ahead. I came, मैंने जहाँ जिससे इंग्लिश सीखी है ना, मतलब our English teacher, he was a makeshift from history. He wanted to do, some adventure, so he started teaching English. So I mean, it's a real incident. English पढ़ाते तो one of my friend's father had come to school, and वो स्कूल के बाद सामने मिल गए टीचर, तो मिलाना पड़ा. तो उसने मेरे फ्रेंड ने मिलाया कि कहता, "सर, he's my father." कहता, "How come?" He said, "How come?" कहता, his actually meaning was कि कैसे आना हुआ. कहता, "How come?" कहता यार, मेरा फ्रेंड पूछ रहा है, कह रहा है, "साले यार, ये सवाल तो मैंने भी नहीं पूछा, पूछना चाहिए था." Yeah, please, sorry. No problem. So then we go down a little bit from France, go a little bit further south, and you come into one of the other countries I love, which is, of course, Italy. I have never leave Italy before. First time I leave Italy. By the way, you don't know, I come from Italy. I never leave Italy before. I go to Malta. I go to Malta for a bigger holiday. You know Malta, of course, you fellows are Indian. In America, they don't know geography, but you know Malta, the little island between Europe and Africa. In Italy, every morning for a breakfast, I have a 2 egg and a 2 piece of toast. I stay in a bigger hotel in Malta. I have a bigger holiday. I say, "Waitress, bring me 2 egg and a 2 piece of toast." The waitress, mamma mia, she crazy. Bring me only 1 egg and 1 piece of toast. I say, "Hey, waitress, I want a 2 piece." She say, "You go to the toilet." I say, "Mamma mia, you don't understand. I want a 2 piece on a table." She say, "You know piece on a table, you son of a bitch." First time I leave Italy, I go to Malta, make a bigger problem for me in the hotel. I say, "Okay, I make a no bigger problem. I eat only 1 egg and only 1 toast. I take a knife, is no fork." I say, "Hey, waitress, I want a fork." She says, "Sure, everybody wants a fork." I say, "Mamma mia, you crazy. You listen to me, lady, very carefully. I want you to give me a fork on a table right now." She said, "I don't give you a fork on a table, you son of a bitch." 2 times already in Malta, they call me a son of a bitch. I'm a come crazy. I'm going to eat a breakfast. I'm going to go to the room. I'm going to go to sleep. There's no sheet on a bed. I'm going to call the reception. I say, "I want a sheet." They say, "You go to the toilet." I say, "Mama." "I want a sheet on a bed." They say, "No sheet on a bed."
Wow, Sundi. I'm already. They call me a son of a bitch. I'm a go crazy. I'm a go back to Italy. I'm a go to the reception. I'm a pay the bill. They say peace be with you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm a go back. The joke actually goes on, but now it gets to be even more on the gray side. So I let it go at this, and let me switch. Let's go further east. Let's go to another favorite country of mine, China. Oh wow. So all of you guys, of course, you know the standard story that the Chinese, they can't use R and they'll say L instead, you know, the flight lice and all this good stuff. So, you know, when this Chinese Kudi is enjoying the elections in the US, be careful. You don't know what exactly she's talking about. That's a completely different story. So here we go. Again, stay with me with the accent if you can. So this is Mita Wong, Mr. Wong. Yeah. This is a Chinese guy telling a joke, right? Mita Wong get married to Mitty Wong. Mita Wong get married to Mitty Wong. This is one. Get with it. So Mita Wong and Mitty Wong get married. Now Mitty Wong, before she get married, her name was Julie. Oh. And Mitty Wong was virgin. But what Mitty Wong don't know is that Mita Wong also virgin. So Mita Wong get married to Mitty Wong, and on the wedding night, Mita Wong asked Mitty Wong, "What do you like?" Because Mita Wong also virgin. Mitty Wong don't know. Mitty Wong also virgin. But she remember. You know, remember? Yeah. Her friends say a few things, so she said, "Okay, I want 69." And Mita Wong jump out of bed. He said, "Julie, you crazy. It's 3 o'clock in the morning. You want chicken, garlic, and fried rice?" Anyway, the joke goes on with Mita Wong and Mitty Wong. Then they had a baby. And the nurse said, "This is your baby." And they produce a white baby. And Mita Wong said, "No, this is Wong." She said, "Yeah, this is Wong." She said, "No, this is Wong." No. "Yeah, this is Wong." He said, "This is white." He said, "Yeah, but this is Wong." She says, "No, this is not Wong. This is white." And Wong and white, and Wong and white, and Wong and white. And then Mita Wong say, "Let me tell you something, lady. 2 Wongs cannot make a white." Okay, so I've poked fun at enough people around the world. So it wouldn't be complete if I didn't poke fun at myself, right? So, you know, obviously, Sandi Srinivasan, I come from the South. So the South have this extremely peculiar way of speaking English, as you all know, right? First of all, you know, they go nuts. They choose names for states they can't pronounce, you know. Nobody in Kerala can say K. It's always, they always say G instead of K, right? It's, you know, Abhi main Gana ga raha hoon. You know, main Gana ga raha hoon. Not Khana kha raha Khana. So, first of all, maybe like I've given you guys a quick lesson, quick one-on-one on how to speak South Indian, okay? Just the basic first lesson. Lesson number 1. When you have a ye, when you have a ye, put a Y before it. When you have a ye, put a Y before it. Easy, no? Yes, yes. But when you actually have a Y, don't say it. Yes? When you have a wo, put a W before it. So remember, when you have a ye, put a Y before it. When you actually have a Y, don't say it. And when you have a wo, put a W before it. W. So whether you are the CEO or only ordinary employee, good way is to practice this example sentence. Yesterday, every elephant I saw was of the color yellow. So
I'll finish off with a color joke. So, Okay. Mr. A, B, C, D, X, Y, Z, a long name, ready, goes for an interview. And the interviewer says, we've looked at all your wonderful records of, Microsoft this and Microsoft that, and this security certificate and that security certificate. All of these are fantastic. We only have a little concern with your ability to use the English language. So we've devised a little test for you. We're going to randomly pull out colors from a hat, and we'd like you to use these colors in a sentence. So Mr. Reddy says, no problem, sir. Yes, sir. So the colors that happen to be pulled out happen to be green, pink, yellow, and red. So Mr. Reddy, so one thing about the South Indians, man, you got to give it, they're a little smart, right? So they can pick up stuff quickly. They may not be able to speak English well, but what the hell, right? So Mr. Reddy says, question, sir? He says, yes, go ahead, Mr. Reddy. Do I have to use the colors in water, sir? Remember water, put a wo before. Yeah. Order. Well, they don't necessarily have to be in order, but if you can get them in order, more power to you, Mr. Reddy, go for it, right? So, okay, sir, okay, sir, okay. So it is green, pink, yellow, and red. Okay, I will be working in your call center, sir. And first of all, the phone will go green, 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 green. I will pick it up, ping, and I will say Red yellow. Hello. Yellow. Reddy speaking. So on that note, guys, you've given me a lot of love, a lot of affection. Thank you very much. You took me back 35 years. I really appreciate it. Enjoyed myself. Thank you, guys. Thank you, Rohit. Thank you, Garv. Thank you, Ashu, Deepak, the whole lot of you guys. Yeah. Hey, thanks. Thank you, Thanks, Sandeep. thank you, Cindy. Oh, great shot. Great, Sir. great, Sandy. Great. Give it up for Sandeep, sir. Nice, Sunday, nice. Yeah. Nice, nice. So I'm pretty sure, guys, you'll To have some like, of this was such a fabulous performance, and I'm sure you'd be happy to connect with Sandeep. Like you'll be able to connect with him wherever you want to. I'm Wonderful, ready to tell you how to. excellent performance today. Excellent. This was- Excellent. Long time. मजा आ गया सर. And good, Jwalan- Ravindra sir. Thank you. Thank you. Overall. But Sundi, yeah. all right, guys. Before we move on to informal discussions, I'd just like to bring on for a couple of minutes Mr. Ravindra Kumar, who is the president of IITD Alumni Association, to say a few words. And I think post that we can move to informal discussions. So please welcome to the spotlight the person on who's been able to make this happen and who's who has made this possible. So put your hands together and welcome Mr. Ravindra Kumar. Yeah, thank you, Gaurav. I mean, it's a pleasure and honor to be here. But more Sundi was final year, I was in the first year, and there used to be fresher competition in a hostel, and I was in Jwalamukhi hostel, and Sundi was my, he was in final first year. He was our director, and he has in my life only I played once in my life in a skit, and he was director, and some. You're on mute. Sir, you got muted. Yeah, it was a fun to be with the Sundi, and this took me back to the 83 when I was in the first year, and was very excited when this whole, since the program, because the seniors are the seniors who ragged you. So, so that is a real definitely, you remember them, but that's how you get transformed, that he is still the same. And when I was a first year student, we used to, dream that we'll also be like Sundi once we come to the final year. And he was fine. So that was how we have done. And yeah, Gaurav, you are done extremely well. And apart from you, I think especially Deepak was telling the story. Everybody was able to correlate, even the flight, somehow just beach mein maza sa ruk gaya, but what happened when he was going up USA, whether he really, he was really successful in getting a girl, or what happened to air hostess, still the mystery there. I think we have to call him some other time. Then yes, Ashutosh was also great. I think before I don't know who else there were. I was a bit late. I think 8:15 I came. And yes, Rohit. As for the Rohit is there that
once, I think 3 years back, I was asking some venture capital, please give me your number. And he told you to take from the Rohit. I said, Rohit has your number, but he is a human LinkedIn. So, Yes. so that is the power of Rohit. And that's even my journey is also because of Rohit. He was the guiding. I call him my angel, guiding angels. Today I'm in this post because of the Rohit. Paid. I mean, he was instrumental, or he was my guiding angels. And I'm very happy that Gaurav, that you took a time and it's not that easy to make us laugh, especially in the through the digital this medium or virtual medium. So it's a great, and I very happy that a lot of people have come and they shared the story, and so really cool stuff. And Gaurav, it's you also had the engineering background, and I hope that Deepak has not motivated after you to take comedy, but on the positive side, I think you both are good making and people to laugh. It's not an easy things. So you're doing a great job, and this is the toughest thing to make somebody to laugh, and that to be in a digital medium. So with that, I thank all the my fellow alums. And this is, today we are on the second day of our alum festival. This is the first time we are doing the 3 days. Normally we have 1 day event, but there were a lot of challenges how to, because institute was reluctant to have the in the campus and how to do. So it was a challenge. So, but it has, I think, come out very well, and people have supported, very happy. And thank you, Gaurav, and thank you, Rohit, and thank you, Sundi, thank you, Astosh, thank you, Deepak. And if I forget anybody who was there and who has made us to laugh, I thank to him, and I thank all, and have a great time. Thank you, Gaurav. Thank you. Thank you, guys. Bye. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thanks for inviting me, and I'm Yeah. so glad that I could be a part of your alumni meet. And with that, I'd like to thank obviously the president of ITDA and of course Mr. Rohit for inviting me. And a huge round of applause for all the performers we had today. We had Sandy sir, we had Deepak, and we had Ashutosh Mishra. And on that note, guys, I'd like to take your leave, but I'm sure like whoever's the host can probably let you go on for the informal conversation. So whatever the agenda is after this, that's something President sir will take care of. And thank you so much, Sandy, guys. you are amazing. Sandy, you are amazing. Like amazing. Thank you. You- Thank you, guys. Maybe so much. maybe you can buy a house with stand-up comedian. अभी 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 उम्र ऐसे हो गई, जब स्टैंड अप करने जाओ वहीं पे कॉमेडी हो जाती है. नहीं, you are amazing, Sandy. Thank you. Absolutely. Very, And- very and- kind of you guys. And I don't know if you, even the cross people would, of all the people, you can relate to all the people. That's so all the people can relate to your jokes, So world over, you can be famous. Yeah, on your Lambretta joke that you had, you can maybe have a little addition, Yeah. Which, What is that? you What is that? compare that to Asha Parikh, you can say that if she took it to the temple and said, Bhagwan, मैं आपके पास अपनी बड़ी आस लेके आई हूँ, That was good. Yeah. वो स्कूटी भी ना, like. Yes, indeed. All right, guys. So I'm going to go. Take care. Thank you. Really appreciate. Yeah. Thank you, Sundi, making it, taking it to a new level. Everyone, great show. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank Bye. you. Good Thanks, night. sir. Rohit, for putting it together. Great show. Yeah, Rohit, great job. Thank you, Kalpen. Thank you, Rakesh from the, and then other guy who's the, Praveen was there, whom I can correlate. Thank you. Thanks, everyone. Good night. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Rohit. Bye. Bye. Rakesh is also there. Thank you, Rakesh. Okay, sir. Good Okay, night. Raju. Bye. Bye.